Good morning, everyone. Myself, Dr. Anand Pal Singh Kushwaha. Today we are going to discuss scalp. ये एग्जाम में 20 मार्क्स में पूछा जाता है, so हम डिफाइन करेंगे कंटेंट में डेफिनेशन, एक्सटेंट्स, स्ट्रक्चर्स, लेयर्स ऑफ स्कैल्प, आर्टरियल सप्लाई, लिम्फेटिक ड्रेनेज, वेनस सप्लाई, नर्व सप्लाई. नर्व सप्लाई डिवाइड होगा टू पार्ट्स में, इन फ्रंट ऑफ ऑरिकल्स, बिहाइंड द ऑरिकल्स, सेंसरी मोटर एंड अप्लाइड एनाटॉमी. सो definition: the soft tissues covering the cranial vault from scalp, right, extend anteriorly supraorbital margins, posteriorly external occipital protuberance and superior nuclear lines, each side superior temporal lines, right. स्ट्रक्चर की बात करें तो फॉर्मूला SCALP, S फॉर स्किन, C फॉर कनेक्टिव टिश्यू और सुपरफिशियल फेशिया, A फॉर एपोन्यूरोसिस, D फेशिया एपोन्यूरोसिस, L फॉर लूज एल्युलर टिश्यू, P फॉर pericranium. So SCALP, scalp. Scalp is made of 5 layers. Layers of scalp. First one is skin, then superficial fascia with blood vessels. This one dotted structure is blood vessels. Then third one is aponeurosis of epicranium, loose connective tissue and pericranium. 1, 2, 3, 4, 5. Right? 1, 2, 3, 4, 5. Then this green area is dura mater, and this one is superior sagittal sinus. This one is triangular superior sagittal sinus, and 2 vein is there. This is emissary veins. So layers of scalp contain skin, superficial fascia, epicranium, aponeurosis, temporal fascia, temporalis muscles and pericranium, right. So layers of scalp. Next one is arterial supply of scalps. Arterial supply of scalps में supratrochlear artery, supraorbital artery, superficial temporal artery, पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी एंड ऑक्सीपिटल आर्टरी. इसे डिफाइन करेंगे. सबसे ऊपर सुप्राट्रोक्लियर आर्टरी, दिस स्मॉल वन इज सुप्राट्रोक्लियर आर्टरी. देन सेकंड वन इज सुप्राऑर्बिटल आर्टरी. थर्ड वन इज सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी, दिस वन इज सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी, दिस वन इज पिन्ना, राइट. देन पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी, behind the pinna, posterior auricular artery, and this one is occipital artery. So occipital, right, arterial supply of scalp. Next one is lymphatic drainage. So lymphatic drainage divided in two parts. Anterior part of scalp drains into the periauricular lymph nodes, right. Anterior part of scalp drains into the periauricular lymph node. Posterior part of scalp drains into the posterior auricular and occipital lymph nodes, right. So lymphatic drainage two part में divide होगा. Next one is nerve supply. So nerve supply of scalp ये divide होगा two parts में, right. So pre-auricular and post-auricular. So supratrochlear nerve and supraorbital nerve, right. Then zygomatico-temporal nerve, auriculo-temporal nerve, 1, 2, 3 and 4. Then here this one is auricles. So greater auricular nerve, lesser occipital nerve, then greater occipital nerve and third occipital nerve. Here 2 is motor nerves. This one is temporal branch of facial motor nerve, this green one, and this one green one is posterior auricular motor nerve. So nerve supply of scalp again हम लोग इसे डिफाइन करेंगे. इन फ्रंट ऑफ ऑरिकल्स में सेंसरी नर्व में सुप्राट्रोक्लियर नर्व, सुप्राऑर्बिटल नर्व, जाइगोमेटिको टेम्पोरल नर्व, ऑरिको टेम्पोरल नर्व. मोटर नर्व्स में टेम्पोरल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व. बिहाइंड द ऑरिकल्स, ऑरिकल्स के पीछे बिहाइंड द ऑरिकल्स, posterior division of great auricular nerve, lesser occipital nerve, greater occipital nerve, third occipital nerve. Then motor posterior auricular branch of facial nerve. So ये इसका है nerve supply of scalp, right. Next one is venous drainage. So venous drainage में हमने यहाँ पे कुछ points लिखे हैं. So हमें याद रखना है 1 to 7, 11, 13. 1, 1, 2, 7, 11 and 13, right. So one is supratrochlear vein. One is supratrochlear vein. Second one is supraorbital vein. Supratrochlear, supraorbital vein. Then 7 is superficial temporal vein, right. Superficial temporal vein. Then 11 is posterior auricular vein. Then 13 is occipital vein, right. 13 is occipital vein. And other number is mentioned here. Supratrochlear vein, supraorbital vein, anterior facial vein, common facial vein, anterior division, posterior division of facial vein, superficial temporal vein, maxillary vein, cavernous sinus, pterygoid venous plexus, posterior auricular vein, occipital plexus, occipital vein and vertebral veins. Applied anatomy of the scalp. So common site of sebaceous cyst because abundance of sebaceous gland, right. commonest site होती है sebaceous cyst की. danger area of scalp, क्यों कहते हैं इसे? बिकॉज
emissary veins, layer of loose areolar tissues transmit infection to the scalp to cranial nervous sinus, right? क्रेनियल वेनस साइनस में इंफेक्शन स्प्रेड होने के चांसेस ज्यादा होते हैं स्केल्प से क्रेनियल वेनस साइनस में, राइट? इसीलिए इसे डेंजर एरिया ऑफ स्केल्प भी बोलते हैं. देन सिफेले हेमेटोमा, पेरिक्रेनियम इज एडरेंट टू द सुचर्स, कलेक्शन ऑफ द फ्लूइड डीप टू द पेरिक्रेनियम नोन एज सिफेले हेमेटोमा. इसकी अपडेट एनाटॉमी है. वंस अगेन हम इसे रिवाइज करेंगे एक बार. Definition, extent, structure, layers of scalp, arterial supply, lymphatic drainage, venous supply, nerve supply, in front of auricles, behind auricles, applied anatomy. Thank you.